Hello everyone. In today's video, I am going to tell you about who issues bonds and why, benefits of issuing bonds and benefits of investing in bonds. But before hopping on to our topic, we must know that bond issuance requires compliance with and adherence to various federal regulations, and only the entities who have fulfilled these regulations are allowed to issue bonds. Now, there are various issuers of bonds. First is central government, जो कि आरबीआई के थ्रू जी सेट इशू करते हैं, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट की डेवलपमेंट के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं। थर्ड इज म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करते हैं। एंड कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स भी बॉन्ड्स इशू करती हैं। करंटली बॉन्ड मार्केट में 66% यानी कि 2/3 बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है एंड 1/3 बॉन्ड्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। नाउ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सॉवरेन गारंटी, आसान भाषा में कहें तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा रहता है, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये सपोर्ट देखने के लिए हम उनकी क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं। ऑल दीज एंटिटीज इशू बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फॉर देयर न्यू और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। नाउ गवर्नमेंट विल रेज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स और टू मीट देयर डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स। नाउ डेफिसिट रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उनकी अर्निंग से ज्यादा हो जाता है तो उस गैप को वो फिल करने के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं। Corporates also prefer bonds as they can preserve their equity dilution, but they usually give lower rates of interest. Now, what is the benefit in issuing bonds? First, capital generation without equity dilution. एक कॉर्पोरेट जब शेयर्स इशू करती है, वो पैसे रेज करने के साथ साथ अपनी ओनरशिप भी दे देती है। बॉन्ड्स में ये चीज नहीं होती। सेकंड, lower interest rates. Issuers with strong credit rating can issue bonds at a very low interest rate, which reduces the cost of borrowing for them. अब गवर्नमेंट और ट्रिपल ए पेपर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 7 to 8%, जो कि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत कम है। इससे उनकी बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। थर्ड, चॉइस ऑफ टेन्योर्स. Tenures can range from 1 year to even 40 years. Issuers have full liberty to decide their tenure according to their needs. एंड वो अपने बॉन्ड में एक कॉलेबल फीचर भी ऐड कर सकते हैं। कॉलेबल फीचर में क्या होता है कि वो मैच्योरिटी डेट से पहले ही आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डू दिस व्हेन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूसेस इन द मार्केट। अगर आपने अभी कुछ पैसा 8% के इंटरेस्ट रेट पे रेज करा हुआ है एंड मार्केट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम्स डाउन टू 7%, तो आप न्यू फंड्स इशू करके 8% वाले को पे कर सकते हैं। दिस इज द कॉलेबल फीचर। Fourth, diversification in source and vested interest of general public. Now bonds attract investors with lower risk appetite. Many of the investors avoid corporate investments because of the risk in equity. Now bond creates a passage of investment for these category of investors. Now it will also help organizations to find easy generation of capital when they have exhausted their institutional credit. Institutional credit मतलब वो debt जो उन्होंने किसी financial institution से लिया है। Now for example, let's say आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बट आपको उसकी इक्विटी का पार्ट नहीं बनना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी थ्रू बॉन्ड्स। फिफ्थ, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स. नाउ मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स हैव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, so the issuer typically knows that how much interest he has to pay and at what point of time he will pay it. Now this adds a stability and predictability factor and can help you in financial planning. Now let's keep aside the issuance part. Let's see कि आपको bonds में invest करके क्या फायदा मिलता है। Now bonds are similar to FDs, but they come with many more benefits. Higher returns. Bonds have a return range of 7 to 13%, while FDs only have 5 to 7%. Easier exit. A bond holder can sell his bond whenever he needs money in the secondary market. No lock-in period. Unlike other government securities and FDs, bonds do not have any lock-in period and it can be sold in the secondary market before maturity also. Tax benefits. ऐसे बहुत सारे bonds होते हैं जिनमें आपको बहुत सारे tax savings benefits मिलते हैं, like tax-free bonds, tax savings bonds, and sovereign gold bonds. Diversification. This is the most important benefits. Bonds provide investors a way to diversify their investment portfolios. अब bonds की risk profile stocks से काफी अलग होती है, and that's why they become a valuable asset class for risk management. Income stream. Bond holders receive periodic interest payments, be it monthly, quarterly, semi-annually, or annually. And bonds are best for the investors who are income focused and जिन्हें regular payments पसंद है. Capital preservation.
अनलाइक इक्विटी, बॉन्ड मार्केट में आपका कैपिटल अमाउंट हमेशा इंटैक्ट रहता है एंड इन्वेस्टर कैन बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ द सेफ्टी। बॉन्ड्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना और भी आसान हो गया है। रिटेल पार्टिसिपेशन रोज के रोज इवॉल्व हो रही है एंड आप एंड मेरे जैसे बेसिक सैलरी इन्वेस्टर्स भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, which gives you what? Fixed returns, less or even no risk and diversification. Subscribe to Bonds India for more content like this and drop your queries in the comment section. We'll make sure to answer them.